अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों Welcome, welcome, hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome. Om Shanti, brother. Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, welcome. And what to say? We are very happy to have you with us and see the fresh flower for you. Gautami Ben, आपका भी स्वागत है. Thank you very much for your invitation. वेलकम. आज जॉर्जियो भाई हमारे साथ इटली से है और अपना अनुभव सुनाने जा रहे हैं. So brother says sister Gautami and she is from Lagos, Nigeria, and she is translator for us today. Okay. So Namaste. Namaste, Swagatam as well with the wonderful flowers. Thank you, thank you. So I would like to request you to please pause after a couple of sentences, so it would be easy for translating, right? Okay. Yes, So sure. brother, you may start, please. We will take a good rhythm with the translation. Yes, again, very nice to get your invitation. My name is Giorgio, and originally I am from Italy, and I am presently living at the center, BK Center in Rome. That ओम is, शांति. आपसे निमंत्रण पाके मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा. वास्तव में मैं इटली का हूँ. फिलहाल मैं रोम के एक सेंटर पे बाबा के सेवाओं के निमित्त बनकर यहाँ पे हूँ. so I took Gyan in 87, so must be now around 35 years that I am in this knowledge. मैं 1987 में ज्ञान में आया और अभी तक तो लगभग 35 वर्ष हुए हैं. So it's a long and very beautiful story. So I will try to share with you all the beautiful time and beautiful experience that I had with Baba till now. ये बहुत ही लंबा और बहुत ही खूबसूरत यात्रा रही मेरी. बहुत सारे अच्छे अनुभव और बहुत सारी बातें हुई. मैं आपको ऐसे अपने अच्छे अनुभव और अच्छी बातें मैं आपको सुनाऊंगा. So when I took Gyan, I was living in France. I was living there for 10 years, living in France. And I remember that I was searching. I was searching for the true knowledge. I was searching for God. And the day that I took my first lesson was the day of my लौकिक birthday. मैं जब ज्ञान में आया था तब मैं फ्रांस में था. तब तक एक्चुअली 10 साल से मैं फ्रांस में ही था. और मुझे याद है जब मैं ज्ञान लिया सबसे पहला सत्र के दिन, जैसे क्योंकि उन दिनों में मैं सच्चे ज्ञान के लिए और परमात्मा की खोज में था और मेरी खोज संपन्न हुई जैसे ही मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और ये कोर्स में सुनता रहा और उसी दिन मेरे लौकिक जन्मदिन भी था. Very, very special that I got this incredible gift the day of my birthday when I was 33 years old, and
I remember was the first step that changed completely my life. मुझे लगा कि मैं मेरे जन्मदिन पर बहुत ही अद्भुत सौगात मुझे मिला है। 35 वर्ष की आयु में था और जन्मदिन के दिन ही मुझे यूँ सत्य ज्ञान का परिचय मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था और मुझे बहुत अच्छा लगा। And so I remember that this first lesson, that is the lesson of the soul, who am I, it did an effect of like lighting a bulb in my forehead. Was so strong this experience of realizing that I am a soul. पहला सत्र ही मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये आत्मा का परिचय देने वाला और फिर भ्रुकुटी के बीच में मैं एक चमकता हुआ मतलब मैं एक जगती हुई ज्योति हूँ। तो एक बल्ब जैसे रोशनी मेरे को अनुभव हुई। ये बहुत ही सुंदर अनुभव रहा कि मैं एक आत्मा हूँ। And so I was so intoxicated with this experience, intoxicated with the knowledge of the soul, that I remember I went back to the place where I was working, and I was trying to share with my colleagues, with my friend, this incredible news that we have to realize that we are souls, but the effect for the others wasn't the same like for me. पहला दिन का सत्र आत्मा का परिचय मेरे लिए एक अद्भुत से कम नहीं था। इतना अच्छा लगा कि मेरा नशा मेरा पारा चढ़ गया और मुझे इतना अंदर प्रभाव हुआ कि मैं जैसे ही अपने कार्यशाला में गया, मेरे जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहाँ के सभी मेरे मित्रों को, मेरे कलीग्स को मैंने इस आत्मा का परिचय बताया और फिर बोला कि हमको अभी समय आ गया है कि हमको रियलाइज करना है कि हम सब एक अद्भुत शक्ति है करके। मैं जितना नशे में बात किया उन किसी के ऊपर भी इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना मेरे ऊपर ये परिचय प्रभाव डाला। And so from that first lesson we had the rest of the lesson, and I start having for several months very, very deep and beautiful experience of the soul, experiencing of Baba, experiencing of the soul world, and was very, very, very intense. A treasure of experiences when I took Gyan. पहला सत्र मेरे लिए बहुत प्रभावशाली रहा। इस तरीके के इससे मैंने कोर्स को संपन्न किया, पर कुछ महीनों तक मैंने बहुत अच्छे अनुभवों की मैं धनी बन गया, जैसे आत्मा का साक्षात्कार होना, परमात्मा की साक्षात्कार होना, परम धाम की साक्षात्कार होना। इस विषय में मुझे अनेक अद्भुत अनुभव हुए। I remember that I used to go to sleep at night, and for several weeks I used to wake up in the middle of the night and just have this experience of having all around me this red and golden light and the presence of Shiv Baba, the point of light. तो मुझे याद है मैं रात को भी जागता था, तो मेरी even in the sleep you used to see, isn't it, the experience? Not in the sleep. I used to wake up in the middle of the night and experience this light around me. Yes, मध्य रात्रि में मैं जाग जाता था और देखता तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, वो लाल सुनहरी रोशनी मेरे चारों तरफ फैली हुई थी। मैं शिव बाबा की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। And this when at last I went to Madhuban and I met Baba, that at that time we used to have a personal meeting with Baba,
And Baba also told me at the end of my blessing that I had very good experiences. उन दिनों में हम जब मधुबन बाप मिलन पे जाते थे तो बाबा के साथ यूं एकांत में पर्सनल मुलाकात होती थी और मेरी जब बारी आई बाबा ने जो बोला अंत में मुझसे मिलने के बाद अंत में बोला कि ये बच्चे को बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं करके And so as soon as I finished the course, the 7-day course, my desire was to live in a center. And so we, after 2 months in Guyana, we started a center wasn't I और कंप्लीट करने के तुरंत ही मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मुझे एक सेंटर वासी की तरह सेंटर पे रहना है बस बात ज्यादा समय ऐसी नहीं रही बुद्धि में और 2 मास में वहां पे हमने सेंटर खोला जहां पे हमने कोर्स किया वहां पे अच्छे से एक सेंटर खोल के मैं सेंटर वासी की तरह सेंटर में रहने लगा and we had a retreat. We had a retreat where Junkie Daddy and Gianti Ben they came, and so that also was a step forward for me to really decide that this was the life that I was looking for, and I wanted to live a Brahmin life, fully live a Brahmin life. तो उसके बाद ऐसा हुआ मैं एक योग भट्टी चली तो भट्टी में रिट्रीट कहते हैं तो वहाँ दादी जानकी जी और जयंती बहन जी दोनों भी आए दोनों का मौजूदगी और उनका बहुत अच्छा प्रभावशाली था मतलब तभी मुझे अंदर से ये महसूस हो गया कि यही तो है वो जीवन में जीना चाहता हूँ एक ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण की जीवन तो मुझे ऐसे ब्राह्मण की जीवन जीना है करके मैंने निर्णय ले लिया पक्का पक्का And so I stayed almost 1 year in this center in south of France, and 1 year later I went to Rome to help for a few days to help in the launch of the program Global Cooperation for a Better World. It was an international program. मैं दक्षिण फ्रांस के जगह पे 1 साल लगभग सेंटर पे रहा और तत्पश्चात मैं वापस रोम आया और रोम में मैंने मदद की है उन लोगों को एक अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड पीस would you please repeat Global Cooperation for a Better World was a Global very big Cooperation for a Better World नाम के एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट थे हमारी ब्रह्मा कुमारी इसकी वो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में मैं सहयोग देने लगा So this was the launch of the program in Rome, and in that occasion Janki Daddy also was there, and she actually asked me to go back to Rome, to stay in Rome and to help with the service there, and so it's what I did. तो ये ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड का जो अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम था इसका उद्घाटन का कार्यक्रम था इस कार्यक्रम में दादी जानकी जी भी आए और दादी ने कहा मुझे कि अब तो तुम रोम ही में रहो और यहाँ पे यहाँ की सेवाओं में सहयोग दो And so after that one of my specialty at that time was that I was a cook, so I could make bread, I could cook good meals, and so
I start traveling thanks to Junkie Daddy in many places in the world. Actually, I've been traveling in Europe, in America, in Africa to help for many years to help organizing the cooking for the programs, for the retreats. मेरी ये विशेषता रही है कि मैं अब बहुत अच्छा भोजन बनाता हूँ और उन दिनों में वो सेंटर पे मैं ब्रेड बनाता था, बेक करता था, भोजन इत्यादि कई चीजें बनाता था और दादी जानकी जी ने ये देखकर मुझे बहुत अच्छा सेवा दी और मैं दादी जी के साथ जगह-जगह पे बहुत सारे देश घूमा सेवा के निमित्त। जहाँ भी जाता मेरा एक ही सेवा ये विशेष रहता कि मुझे भोजन बनाना था। Yes, and I remember in one of my traveling to Madhuban was probably in the 90 that Daddy Janki asked me to help in the kitchen in Madhuban because one of the cook was sick, and so I stayed several months in Madhuban working in the kitchen and being Madhuban Nivasi, getting to know Madhuban and getting to know, become friend with all the Madhuban Nivasi, Suryabai, Atam Prakash, and all of them. एक बार मुझे याद है जब मैं मधुबन यात्रा में था, मधुबन में दादी जानकी जी ने मुझे बुलाया और यही भोजन बनाने की सेवा दी क्योंकि उस समय जो भोजन बनाने वाला भाई था वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ा तो उस रहने का उस समय वो सेवा के दौरान ही मैंने मधुबन निवासी बनकर कई मधुबन निवासियों के साथ मेरा परिचय बढ़ा। सूर्य भाई जी, आत्म प्रकाश भाई जी इत्यादि अनेक भाइयों के साथ मेरा परिचय बढ़ा। So my duty was to help in the kitchen and especially to prepare the jam. The jam for the breakfast was this gajar jam. So Okay. I remember these huge pots and making lot of amount of this jam. इस तरीके से मैं वहां मधुबन निवासी बनकर भोजन बनाने की सेवा में व्यस्त हो गया। खास करके मेरी सेवा जैम बनाने की थी, अर्थात जो ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना जैम, गाजर का जैम, जो गाजरों को डालकर इतनी बड़ी-बड़ी पतीलियों में मुझे ऐसे हिलाते जैम बनाने की सेवा थी। And it's in that occasion that I learn how important when we prepare the food that we let the power, the energy of Shiv Baba going into the food. So I was feeling so connected with that. Was experiences that were really even physically powerful. उसी समय मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मैंने ये भी सीखा, ये देखा कि जैसे मैं वो जैम बनाने में लग जाता था, बाबा की अनमोल शक्ति ऊपर से वो रोशनी बह रही है और मुझे भरपूर कर रही है। सच में मैं स्वयं को बहुत भरपूर महसूस करता था, बहुत शक्तिशाली। इतना मन की बात ही नहीं पर तन भी बहुत ही अच्छा शक्तिशाली मैं महसूस करता था। And so after that training in Madhuban, I start traveling in many places under invitation of Janki Dadi, and I had really the fortune of being for the starting of Global House, for the starting of Global Retreat Center in UK, and I had this fortune of being fully in the middle of the BK family. बस यही सेवा जो जैम बनाने की है, इस सेवा की ट्रेनिंग के
पश्चात दादी जी जहाँ जहाँ निमंत्रण देती मैं वहाँ वहाँ सेवा के लिए चले जाता। खास करके मुझे बहुत परम सौभाग्य मिला लंदन में यूरोप में जो ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस शुरू हुआ, ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस, और तत्पश्चात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर भी शुरू हुआ। तो ये दोनों की शुरुआत के दिनों में मैं जुड़ा रहा और ब्राह्मण परिवार के बीचों बीच रहकर सेवा करने का मुझे अद्भुत मौका मिला। And the kitchen is the heart of the house. So even if I was busy whilst certain programs was going on, but I had always the chance to meet everyone and to receive so many blessings that even now make me fly. आप सबको पता है ना, बाबा के घर का दिल अर्थात बीचों बीच मुख्य जगह है ही बाबा का किचन। तो किचन की सेवाओं में मैं व्यस्त रहता था, जहां भी जाता किचन की सेवा करता। वहां बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते थे। मैं किचन की सेवा करते करते पूरी कार्यक्रम तो जा नहीं पाता, देख नहीं पाता, परंतु कार्यक्रम के अंत में हर समय मुझे मौका मिलता था सबसे मिलने का, और इतने सारे लोगों की मैंने दुआएं ली कि बात मत पूछो। आज तक मुझे उन सब की दिल की दुआएं उड़ा रही है। And so this is a great fortune when the family, the BK family, see you in a very special way and give you blessings. And doesn't matter what speciality you have. The importance is that you make it available. You make it available for everyone, and this make your speciality grow and make your stage grow तो spiritually. ये मेरे लिए महा सौभाग्य रहा कि ब्राह्मणों की विशेष दुआओं के मैं पात्र बना। परिवार की विशेष दुआएं इतनी अनमोल है, ये दुआएं मुझे आगे बढ़ने में बहुत मददगार रही। मैंने ये सीखा और ये समझा कि अगर हम अपनी विशेषताएं दूसरों की सेवा में अवेलेबल रखेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों की दुआएं भी मिलेंगी और दूसरों भी आगे बढ़ सकते हैं। And this is what Baba keeps saying. Often in the Murli says that it's not just speaking that does the service, but even little things, whatever you are able to do, you can do. If you do it with the right consciousness, if you do it in selfless way, this is a huge fortune for yourself, and it's an inspiration for others also. बाबा ने कई बारी मुरलियों में कहा है, और आप सबको भी पता है, और ये महज एक कहने की बात नहीं है, परंतु ये सत्य है कि कुछ भी करो, छोटी से छोटी सेवा करो, परंतु कुछ भी करो, करते वक्त दिल से करो, मन से करो, निस्वार्थ भाव से करो, और बहुत ही अच्छी कॉन्शियसनेस के साथ करेंगे तो सबकी दुआएं मिलेंगी। ये And दूसरों को प्रेरणा भी देगी। so I've been going to Madhuban every year for several months, but when it was time to come back in Italy or in Europe, was very always I felt wasn't enough. And so in 2005, I went to Madhuban with one-way ticket, and I stayed 7 years in Mount Abu. वाह, व्हाट अ फॉर्च्यून। भाई साहब कहते हैं कई बार मैं मधुबन गया, हर बार जब भी गया कई महीने में रहा, वहां सेवा करता रहा, और जब भी वापस आने का समय आता मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। कैसे तैसे मैं वापस यूरोप आता या फिर फ्रांस जाता, जहां भी मुझे वापस जाना होता, परंतु मुझे ठीक नहीं लगता था। इसीलिए 2005 में जब मुझे मधुबन जाना था, मैं एक तरफा टिकट लेके चला गया।
वापसी And का so, टिकट नहीं लिया। and so I remember that I was very happy with my life, but I had only one desire left in my mind, and that desire was to spend more time in Madhuban, to spend more time in India. And this is what I did. I informed Daddy Janki, and so from there start a very, very beautiful time of my life where I was able to stay at the center of the Brahmin places, Madhuban, Yansarovar. I saw the building of Shantivan. So incredible story thinking now. मैं मधुबन, वैसे मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। कुछ ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं थी, परंतु दिल में सदा एक ख्वाहिश रही, वही कि बस ज्यादा से ज्यादा समय मैं मधुबन में रहूं, भारत में रहूं। और ये मेरी ख्वाहिश दादी जानकी जी ने पूरी की। और मैं बहुत सच में खुशकिस्मत हूँ कि मैं मधुबन में रहा, बाबा के घर में अनेक अनेक स्थान में गए रहा, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, पांडव भवन, कुछ इमारतों को बढ़ते हुए मैंने अपने आंखों के सामने देखा। And so when I informed Daddy Janki that I was going to live in India for some time, and she provide for me an accommodation that I still have when I go to Madhuban, and it's just near Gyansarovar. There is a small village called Salgao. And in Salgao there is a building, Baba's building, called Lighthouse. And I have a small room on the top of a lighthouse with a big terrace, and it's a marvelous place, beautiful place where I have Yansarovar in front of my vision. मैंने जब दादी जानकी जी को ये मेरी ख्वाहिश के बारे में बताया कि मुझे ज्यादा समय मधुबन में रहना है करके, दादी जानकी जी ने तुरंत हाँ कहा और मेरे लिए रहने का एक बहुत सुंदर स्थान मुझे अपने अपने के लिए दिया है। अर्थात अभी भी मैं जा सकता हूँ, अभी भी मुझे रहने के लिए वहां पे एक स्थान है। और ये स्थान ज्ञान सरोवर के बिल्कुल बहुत ही करीब एक गांव है, शैलगांव करके, वहां पे एक बिल्डिंग है जिसका नाम लाइट हाउस है। उसके ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा कमरा एक बहुत बड़ी टेरेस के साथ है। और जब मैं टेरेस पे खड़े होकर देखता हूँ तो मेरे बिल्कुल सामने ज्ञान सरोवर दिखता है। Yes, and at that time I was a photographer, and probably several pictures that you can see of Daddy Janki, I've been taking that picture because I've been traveling with Daddy. I used to, when I was living in Mount Abu, I used to prepare a juice every morning and take it to Daddy Janki. So she always appreciates a lot fresh juice made in the morning. Juice. What is it? Juice. Okay, right. Yes. Juice. Ras. Juice made with what? Fruits? Made with carrots, with apples, with fresh fruit juice, vegetable juice. उन दिनों में मेरी और एक ख्वाहिश थी, वो है चित्रों को खींचना कैमरा से, और मैं जहां तहां जाता अच्छे से चित्र खींचता था। दादी जानकी जी को भी इस बात का पता है, इसीलिए मैं दादी जानकी जी के साथ कोई भी यात्रा में कहाँ भी गया हूँ, मैं बहुत अच्छे तस्वीर खींचता था। और एक बात भी है कि मैं सुबह वहां जब भी मैं आबू में जितने दिन भी जितना समय में रहा, हर रोज सुबह मैं दादी जानकी जी के लिए ताजे फलों का मैं जूस बना के लेके जाता था। कभी कैरेट, एप्पल इत्यादि और कोई भी फ्रेश फल मिलता, मैं उससे जूस बना के लेके जाता, और दादी जी को ये जूस बहुत पसंद होता था।
So yes, I had the fortune of being able to be very close to Daddy Yankee and to learn a lot, to be inspired. I think Daddy Yankee is the person that inspired me the most, and for me, she's been like a spiritual mother. Even if she didn't like, if I used to say that, she didn't like to be called like a mother, but that was the truth. She's been really the person that opened up the doors of the world, the Brahmin world. तो इस तरीके से दादी जानकी जी के साथ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया, बहुत नज़दीकी संबंध था मेरा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला दादी जी से। और एक तरीके से तो मैं कहूँ दादी जी ने मुझे बहुत प्रेरणा दी और दादी जी मेरे जीवन में एक जैसे आध्यात्मिक मातृ स्वभाव स्वरूप थी, मैं जैसे मेरी माँ। पर मैं जब भी ये कहता था, दादी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। भले उसको पसंद नहीं, परंतु ये सच है कि वो मेरी माँ है, आध्यात्मिक माँ है। और वो इसीलिए क्योंकि वो मेरे को अगर मुझे कुछ पसंद भी नहीं है, तो मैं उनसे दिल खोलकर कह सकता था। और दूसरी बात वो मुझे बाबा के परिवार, ब्राह्मण परिवार के तरफ दरवाजे खोलकर मुझे मिलाया। Like she opened the doors for you with the Brahmin family, world family. World family, yes, because I've been invited in USA, in Mexico, in Guatemala, in Kenya, in all the places in Europe, because at that time we didn't have retreat places, and so we used to rent places and we used to organize everything. And तो so इसीलिए क्योंकि यूएसए, नैरोबी, ग्वाटेमाला, यूरोप के अनेक जगह-जगह पे मुझे जाकर वहाँ सेवाएँ करने का मौका देने वाली तो दादी जानकी जी है। इस तरीके से मेरे दिल के सेवा के दरवाजे अनेक जगहों की तरफ उन्होंने खोलकर मुझे ये बहुत सुंदर सौभाग्य दिया, अवसर दिया, जाके मुझे वहाँ सेवा में कर सकता हूँ क्योंकि उन दिनों में ये अलग-अलग जगह पे रिट्रीट्स बहुत आयोजित हुई और रिट्रीट्स के लिए जगह भी देखना था, कई लोग जुड़ते इसमें और सेवाओं के लिए तो ज़रूरत थी, तो इसीलिए मुझे वहाँ बहुत अच्छा मौका मिला और दादी जी निमित्त बनी इसके लिए। yes, so I stayed 7 years from 2005 till 2012, In and I Madhuban, in well in Lighthouse okay, in in this Lighthouse, Lighthouse Shelgaon. in Salgao. See, it's a Baba's place, Mm. and I became also not just found the Brahmin family. I became very friend with the local people, with the Salgao people, and that also has been a very beautiful experience. I rediscover in India how big is the heart of the people that I could not find in the West, in Europe, and I was fascinated of taking pictures. I used to travel always with my camera, and I have a collection of hundred of picture of people smiling, people happy. So this is something so precious that I found thanks to going back in India, in Mount Abu, and living there for so many years. तो इस तरीके से मुझे माउंट आबू में बहुत साल रहने का अर्थात 7 साल लगातार रहने का मौका मिला। लगभग 2005 से लेकर 7 साल मैं वहाँ रहा। आपको याद होगा लाइट हाउस तो दादी जानकी जी ने मेरे लिए एक रहने का स्थान दिया, उसी स्थान पे मैं 7 साल रहा शेलगाँव में। और इन्हीं दौरान मुझे बहुत सुंदर मौके मिले वहाँ के परिवार से जुड़ने का, ब्राह्मण परिवार के बीच में रहने का और फिर वहाँ जो लोकल लोग हैं अर्थात स्थानिक लोग हैं,
उस गांव में, शलगांव में, उनके साथ भी साथ में रहने का, उनको नजदीकी से देखने का, समझने का मौका मिला। और आपको पता है मैं कैमरा लेकर चले जाता हूँ तस्वीर खींचने के लिए, तो इस तरीके से मैं जहाँ भी जाता वहाँ लोगों की बहुत सारी मैंने तस्वीरें ली है। और मुझे सच में ये अचंभित करने वाली बात है कि इस देश में लोग कितने खुश हैं, कितने बड़े दिल वाले हैं और सच में कितने सहयोगी हैं। और उनके मुस्कुराते चेहरे, उनके खुश मिजाज चेहरों को मैंने अपने कैमरा में कैद करके तस्वीर खींचकर यहाँ वापस ले आया। पर ये बात मुझे कहीं भी यूरोप में या वेस्ट में, पाश्चात्य देशों में कहीं भी ये बात मुझे नजर नहीं आई जो मैंने भारत में देखा, शलगांव में, माउंट आबू में देखा। इसके लिए मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरा सौभाग्य था कि उतने दिन मैं रह पाया, इतनी नजदीकी से उतने अच्छे लोगों के साथ मैं घुल मिल कर रहा और इतने हजारों तस्वीर मैंने लिए, अभी भी मेरे लिए वो एक खजाना है। And I also did several photo exhibition with photos of the traditional local people, the tribes of Mount Abu, the Gracia tribe and the Rabari tribes. I've been knowing very well all of them. I used to also travel with them. And so I have a collection of beautiful photos, and one of the exhibition is called Jewels in the Dust, because Jewels in the garden. In the dust. In the dark, okay. Dust. Dust. Yeah, jewels in the dust, because there in the desert there is a lot of dust, but the faces of the people are so shining and smiling. This is why jewels in the dust of the desert. Beautiful. ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से मैं जितने इतने तस्वीर खींचता था और उन तस्वीरों की कई एग्जीबिशंस भी, प्रदर्शन भी मैंने किया। और कुछ ऐसे एक प्रदर्शनी थी, मतलब ये प्रदर्शनी के जितने भी चित्र थे मैं वहाँ के लोकल गांव वालों की खींचता था और इस तरीके से वहाँ के कुछ आदिवासी लोगों के साथ भी बहुत अच्छी तरह नजदीकी से मैं घुल मिल गया और उनके तस्वीरें लिया। और ग्रासी और फिर राबी जैसे ऐसे दो आदिवासी लोगों के साथ, उनके कस्बों के साथ मुझे बहुत अच्छा, मतलब ज्यादा मैं उनके साथ घुल मिलकर उनके साथ रहने लगा, तो मुझे उनके साथ की बहुत सारी तस्वीरें हैं। और ये प्रदर्शनी का नाम है ज्वेल इन द डस्ट। तो ज्वेल अर्थात इतनी सारी वहाँ रेत की जगह थी, तो वो रेत में, धूप में ये इतने सुंदर, इतनी मुस्कुराते हुए, उनका चेहरा चमकता है मुस्कुराहट से और खुशी से, तो उनको नजदीकी से तस्वीर लेने का, उनके खुश मिजाज चेहरों को अपने कैमरा में कैद करने का मुझे मौका मिला। You know, in Mount Abu, the month of May, there is a big mela of all the Gracia tribes around the Naki Lake. Exactly. And so I used to stay there and take photos, and I used to print and distribute to them. So we became close friend with all the local people. What did you bring to them? Photographs. I used to take their photographs and print. And so if you go to Salgao, in the houses, they all have some picture that I print for them. They have their own traditions and own activities like that. Own festivals, own traditions. Yes. भाई साहब ने पूछा, मीनेश भाई ने पूछा कि ये बहुत बड़ी बात है, आपको ये शब्द भी कैसे याद है, ग्रासिया और रबारी, ये तब तो आदिवासी नाम है, आप बहुत अच्छा आप याद रखे हो, ये बड़ी बात है। तो भाई साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं इन लोगों से बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने तो इन लोगों के साथ रह रहकर इनकी भाषा भी मैंने सीखने लगा हूँ, परंतु जो हिंदी भाषा बोलते हैं ना, वो इनकी आदिवासी भाषा बिल्कुल नहीं बोल सकते, इनकी भाषा ही बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए ये समझना भी बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि मैं उनके साथ रहा तो थोड़ा थोड़ा समझने लगा और उनकी तस्वीरें खींचने लगा। उनका अपना एक मेला भी लगता है सालाना मई मास में, नकी लेक के पास, ये ग्रासिया आदिवासी वालों का एक मेला लगता था। और वो मेला में मैं बस वहां जाके उनके साथ रहता था और उनकी तस्वीरें खींचता था, और वो प्रिंट करके मैं जब उनको देता था वो बहुत खुश हो जाते थे। अभी भी आप अगर शलगांव जाते हैं, उनके कई घरों में मेरे खींचे हुए तस्वीर उनके पास है। And I've been traveling with the Rabari. The Rabari are the Dutwala. Dut. दूध वाला। You know, they used to come from down and walk till Mount Abu with these Milk cans. milk on the head. So I was traveling with them. We traveled from Abu Road to Jaisalmer, and with the camel, with the ute. You know तो रबारी आदिवासी लोगों के साथ भी मेरा अच्छा अनुभव रहा। और ये लोग रबारी अर्थात ये लोग दूध वाले होते थे। दूर दूर से, अर्थात आबू के नीचे, पर्वत के नीचे से ये सर पे दूध रखकर ऊपर आबू तक आते थे। कई जगह जाते थे दूध देने के लिए। मैं इनके साथ जल चला जाता था। कभी कभी तो इनके साथ में आबू से लेकर जैसलमेर तक भी चले जाता, ऊंट पे चढ़कर। And so it's a life of happiness and fortune. Imagine, for 7 years I was in Mount Abu, and I've been participating all Baba's meeting. So I didn't miss one. So great fortune to be there in front of Baba for so many times. ये जीवन खुशी और भाग्य से भरा हुआ है, क्योंकि 7 साल वहां रहना, इन सब बातों के अलावा भी मैं तो बाबा के घर में 7 साल रहकर बाबा मिलन, जो हर साल होता है, तो हर महीना 2 बार, तो सभी बाबा मिलन मैंने एक भी मिस नहीं किया। ये परम सौभाग्य है कि मैं बाबा के सम्मुख बैठता था हर मिलन पे। 7 साल लगातार में ये अनुभव के खजानों को मैंने प्राप्त किया। Yes. So, if you want to ask something Brother, I particular, want to ask, as soon as I translate, you say yes. So which means you know Hindi a bit or a little bit more? yes, I understand. Not completely, but I can understand simple conversation. So what about your Lokik family? Anybody in knowledge? No, my parents left the body long time ago. I have 2 brothers, but they not in Guyana. They met Daddy Janki, they know the Brahmin family, but he's not not their lifestyle. मेरे माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, शरीर छोड़ दिए। मेरे 2 भाई थे, 2 भाई हैं, और ये दोनों भाई दादी जानकी जी से तो मिले, परंतु ज्ञान में नहीं चलते, क्योंकि उनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग है। And so now I'm I'm in Rome, coming back from India in 2012. I stayed. We have a very beautiful retreat place in Italy called Casa Sangam, and so I've been living for 2-3 years there, and after that I'm back in Rome. Kata Sangam, Italian language, what does it mean? Casa Sangam means the house of the meeting, the house where we meet. Sangam, you know what Sangam it is. means? So it's a what, Italian word or Indian word? Sangam is Indian. Casa means house. Means the house of the Sangam. So the house of the meeting. And we had so many people coming there from all over the world. Very beautiful place in the nature. And so I stay several years there, and after
back in Rome, where originally I come from, and I stay here, living in the center with Sister Rada that you met and Sister Wendy. So this is an old center. It's almost probably 40 years that there is a center in Rome. So very important place that it's important for the Christian world. It's like for the Christian world, Rome, it's like Madhuban for the Brahmin family. So very important place. इस तरीके से मैं अपने 7 साल की समय के रहने के बाद भारत से जब लौटा, 2012 की बात है, मैं सीधा इटली आया और इटली में बहुत खूबसूरत जगह है काटा संगम। यहाँ पे मैं 2-3 साल रहा, सेवा करता रहा और ये जगह भी बड़ी खूबसूरत है, प्रकृति के बीचों बीच, और यहाँ कई जगह से लोग आते हैं क्योंकि ये मिलन का जगह है। इसका नाम ही काटा संगम मतलब हाउस ऑफ मीटिंग। इस घर में बहुत सारे समावेश हुए हैं और कई लोगों की सेवा हुई है। और उसके बाद मैं रोम आया, जहाँ से मैं वास्तव में यहाँ की ही रहवासी हूँ। तो यहाँ पे मैं आके अभी मैं रोम के सेंटर पे हूँ, जहाँ मेरे साथ राधा बहन भी है। There's one more sister, isn't it, along with Radha बहन? Sister Wendy. Sister Wendy. That is the original instrument for Rome. सिस्टर वेंडी जो रोम नगर में बाबा की सेवाओं के निमित्त है, पहले से लगभग 40 साल से ये सेंटर यहाँ पे है, बहुत पुराना है और सेवाएं भी बहुत पहले से यहाँ पे हो रही थी। और सिस्टर वेंडी बहुत पुरानी और पहले से बाबा की सेवा के लिए निमित्त यहाँ पे। और तत्पश्चात राधा बहन आई और अभी फिर मैं, राधा बहन और वेंडी बहन तीनों भी इसी सेंटर पे रहते हैं। And so this is the first time I miss going to Madhuban because of the restriction that we have now. Otherwise, I never miss going back every year in Madhuban. So now, as you know, we have a very special situation all over the world with restriction of traveling. And so, as you know, we have developed this way of communicating, this way of interacting, that is something completely new that no one expected, you know. Right. तो मैं पहले भी थोड़ा मिस कर चुकी थी। भाई साहब ने कहा था कि ये जो रोम शहर है, रोम नगर, ये बहुत ही मुख्य जगह है क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जैसे हम सब के लिए मधुबन है, ये क्रिश्चियन वर्ल्ड का मधुबन है, अर्थात तीर्थ यात्रा करके जाते हैं ना, भक्त लोग काशी जैसे जाते हैं, वैसे रोम नगर पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी मुख्य स्थान है उस धर्म के। तो इसीलिए भी ये शहर बहुत ही मशहूर है, नामी ग्रामी है। और भाई साहब ने कहा कि अभी, हाँ जी, वेटिकन सिटी भी तो नजदीक हो जाएगा ना रोम से एकदम। जी सॉरी, बीच में आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी। नो, अच्छा है, आपकी उत्सुकता के प्रश्न पूछ सकते हैं। ब्रदर इज आस्किंग, इज वेटिकन सिटी क्लोज टू यू? Yes, it's I actually every day, most of the day, I go cycling, and so Rome has been built on 7 hills, ancient Rome, and so the center to go to Vatican City, I just have to climb 1 hill, and after going down to the Vatican, it will take probably 20 minutes. with the bicycle. भाई साहब ने पूछा, ये जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी काफी पुरानी और बहुत मशहूर है विश्व के चित्रपट में, तो उन्होंने पूछा ये वेटिकन सिटी क्या नजदीक है? तो भाई साहब कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल नजदीक है, मैं साइकिल में रोज जाता हूँ, 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये जो पुराना रोम देश है, रोम शहर है, ये 7 पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है। ये पुराने ओरिजिनल रोम, एंशिएंट रोम जिसको कहते हैं, ये ऐसे बनी हुई है। और फिर वेटिकन सिटी तो बिल्कुल हमारे से 20 मिनट की दूरी पर है।
और भाई साहब ने ये कहा कि ये बड़ा, जैसे कि अभी यात्रा में काफी बंधन आ गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। हम पहले जैसे ऐसे जा नहीं सकते कहीं भी, चाहे सेवाओं के लिए, चाहे मधुबन यात्रा के लिए। तो इतना आसानी से हम जा नहीं सकते। ये हम सब ने सोचा भी नहीं था ना कि इस तरीके का माहौल ऐसा होगा करके, कभी पिछले दिनों में कभी सोचा नहीं था। परंतु इसका भी ठीक है, ये माहौल ऐसा है, फिर भी हम सब मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे मिलन मनाने के जरिए बदल गए हैं, परंतु हम मिल रहे हैं। इसका भी कमाल है, अच्छा है। Kamal, Kamal. I just shared the last take of yours, that this type of meeting, because of these restrictions in travel, we still meet on Zoom, and it's Yes, a wonder. it's very much okay. Actually, service is been growing so much, uh, and we know that there is a need of helping the world. Many people go through a lot of difficulties, and so we can help with our vibration, with our words, we can help with our presence. So it's very, very lucky to be part of Baba's project. तो इस तरीके से मिलना भी बड़ा बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से भी हम लोगों से मिल सकते हैं। हम सब समझते हैं कि सेवाओं की रूपरेखा बदल गई है, और इस समय कई लोग, बहुत सारे लोग मुश्किलों से गुजर रहे हैं, और इस तरीके से भी हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। दुनिया में कितने मुश्किल झेलने वाले बहुत हैं, तो उन सबको हम मदद कर सकते हैं अपने वाइब्रेशन से, अपने वाचा से मदद कर सकते हैं, अच्छे शब्दों से, और अपनी मौजूदगी से। कुछ ना हो, परंतु हम मौजूद रहेंगे उनकी दुख को सुनने के लिए, बांटने के लिए। तो इस तरीके से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। Yes. So you are from Lagos, so you had Daddy Janki there. Yes, please. You Yes, had please. Daddy Janki has come twice, but I yes. was not here. It's been 9 years, going to be 10 years in Lagos, but I was not here when Daddy Janki has come. Yeah, I remember I had all the news from Daddy's store in Lagos. Beautiful pictures also there. Yes. भाई साहब, मैं एक चीज शेयर करूं? Yes? थैंक यू। पहले इंग्लिश में बता देती हूँ, बहुत छोटा सा किस्सा है। दादी जी, brother Giorgio, Daddy Janki ji has come to Lagos, and I was not here. But when I have come here, Didi Reva, my senior instrument here, she told me all those stories, what happened for past 20 years when I was not here. She said, when I came, Lagos was like that. Airport was not at all good. There was sand ground. There was no flooring. And, always there was no generator. And on the Nipa, the current used to go very frequently. And it was so difficult even to travel from here to Banana Island, or the other side, Ikoi, where most of Baba's Sindhi children live. And so she has to go from here. It takes nearly 2 hours to go for 1 hour class, and then 2 hours to come back. The bridge was also, so she shared everything. So part of one sharing was very, very heart touching for me, where I worked. She said that once it so happened that Daddy Janki was coming, and so they have planned that Daddy should meet the president of Nigeria. And at that time, the president of Nigeria was Baba Obasanjo. So they have planned everything, and Sister Poonam Dalawal is a very determined and a very nice soul. Baba's very loving soul here. So she organized a chartered flight going from Lagos to Abuja, which is the capital city. And so they all went there. So Didi said, we were sitting here, Dadi, and along with Dadi at that time, Josuben, I think she was there, and then Poonam Dalamal and Didi Reva. They all were sitting. Dadi's health was not so very okay, because she was having her body was warm with little temperature. But even like that, they took Dadi there, because it was a meeting with President. Dadi herself was enthusiastic to meet him. But when they were waiting there, they are thinking that they will call. And in front of them, Obasanjo walked away, and he couldn't meet Dadi. And they didn't even inform.
And they stayed for a long time. But after some time, they came to know that the president is not available in the house. And Poonam Dalamal, both, and Reva Didi, they were literally in tears because they took all the way Dadi. And Dadi, she's so valuable to us. And this president didn't even give any intimation, no notice. And, I could see that feeling in Didi's eyes that day when she was sharing with me. So the next morning at 2 o'clock, I sat with Baba and said, Baba, I can't see tears in my instruments. When Dadi came and he did not meet, this is not right. So, Baba, you have to see that he should go and meet Dadi. And after 4 years of this tapasya, it took a long way for me because every year, that first year, by the end of the year, I got an opportunity to attend the program with an invitation by Baba Obasanjo, though he was not a president. He was an ex-president. So he just invited as a bishop. Here we are more considered as bishops, Indian bishops, Christian bishops. So I got every year, I was associated with some bishops because of some service in some churches. And through bishops, I got an invitation to go to Obasanjo's place, Honorable Obasanjo. So then I went for the first year, second year, his birthday, third year, Christmas and his birthday, fourth year, Christmas, birthday, and his, Ogun state celebration, the state formation day. So I'm frequently coming in front of his eyes. So at the fourth year, he met and he said, Sister, and I take a big gift of CDs and books and, everything. So, and especially the Thought for the Day calendar. He says, Sister, I saw your books. They are very nice. Your literature is very good. Then I took an opportunity to talk to him to invite to Madhuban. And things have happened. The drama has made such beautiful plot, very nice planning, that I happened to meet Mrityunjay Bhai in one village in India. When in my 1 month stay in India, I went to serve my birthplace because I felt I just come once in a year, I should serve my Lokix as well. So I went to my birthplace, that is Dharmavaram. It's a remote town. And there I met Mrityunjay Bhai. Then Mrityunjay Bhai said, oh, wow, what are you doing? You're doing good service. Sister, where are you from? And we got interacted. And immediately he shared the invitation that there is an international cultural festival in Madhuban, and you can bring people from Nigeria. I said, is it? Yeah, you should bring president. And that thought, what he has given, as I think, hats off to Mrityunjay Bhai for supporting for these type of thoughts. Meeting a president and bringing him is like a monkey thought, which means it takes a lot of effort. So, and I, without no influence, no connections, no nothing, no proper communication, regular communication. But then, yes, the brother said means it is Baba's words, and Baba wanted it to happen. And so as I returned, I started working towards it. And through bishops, through somebody, I reached his secretary and met him, took time, gave invitations, planned everything, and talked to Reva Didi. Reva Didi said, he's going to meet Daddy. Yes. He went all the way from Nigeria to meet Daddy. And it was only meant for 10 minutes. But then Daddy and he glued together for 1 hour, 10 minutes. They sat together. The last stage at the 1 hour when he was leaving back, he came and sat near the feet of Daddy. So पैरों के पास बैठ गया Daddy का. And he said, Daddy, I am leaving. Give me something that I will go and give to all Nigerians. So when it is translated to Daddy, Daddy said, Main kaun, mera kaun. Take this and go and give to whole Nigeria. Beautiful. After meeting Daddy, he said, I don't want to eat. I don't want to go anywhere. I don't want to meet anybody. He locked himself. Great. It was very difficult to convince him to knock continuously for 2 hours to bring him out to take to Madhuban, because without 4 pilgrimages, his visit will be incomplete. So we said that you have to come to 4 pilgrimages. There's some more powerful places which if you don't visit, your visit is incomplete. And he came forcefully. And at every place, he said, why this place is amazing me. There's something here. I have to come back again to understand more about this place. So his experience was very, very interesting. Great. Great story.
Yeah, I just Yeah. remember Dadi's visit to Lagos. So I remembered my instruments sharing and everything. फिर Mhm. कभी हिंदी में, क्योंकि समय शायद हो गया है, या फिर बोलना है मिनेश भाई? जी जी ठीक है, आप फिर भी सार रूप में समझा सकते हो, 2 मिनट में भले। हाँ जी, सार में 2 शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि भाई जी ने दादी जी लेगोस आए और उस लेगोस की सेवा की, दादी जी की तस्वीरें बड़ी खूबसूरत है करके, क्योंकि तस्वीर निकालते हैं ना, उनको वो तस्वीर याद रह गए कि यह बहुत सुंदर है। तो हमने ये अनुभव शेयर किया। हम नहीं थे, परंतु बाद में जब आए, हमारी रेवा दीदी जी ने काफ़ी कुछ किस्से उस समय की सुनाए, और उसमें ऐसी ये एक मेरे लिए अहम बात थी कि वो यहाँ के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उस समय के राष्ट्रपति थे, वो बाबा ओबासांजो जी। तो उनसे मुलाकात करने के लिए खास एक फ्लाइट ऑर्गेनाइज करके दादी जी को लेके जाना हुआ। उस समय दादी जी को थोड़ा-सा बुखार भी था, परंतु सेवा है करके दादी जी भी बहुत उमंग उत्साह के साथ गए। वो बहुत समय बाहर बैठे रहे और सामने से वो गुज़र गया, और इनके आँखों में बहुत आँसू थे कि हम अपने दादी को इतने दूर लेके आए, परंतु ये मिला भी नहीं करके। मतलब बहुत दुःख हुआ। तो मैं दीदी के उन आँखों में देखी और मैं बाबा को बोली, बाबा, जिसके लिए मिलने के लिए भगवान का इतना सर्वश्रेष्ठ और इतनी शक्तिशाली निमित्त यहाँ पे आए और वो मिला नहीं, उसको मिलना ही पड़ेगा जाके। ये दृढ़ संकल्प मैंने लिया और बहुत समय तक अमृत वेला उसके साथ, मतलब बहुत ही बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को देती रही, और लगभग रेगुलर हर साल किसी न किसी ज़रिए से मैं वो भाई से मिलती गई। अर्थात कभी उनके बर्थडे, कभी क्रिसमस, कभी उनके विलेज फॉर्मेशन डे है, ओगुन स्टेट फॉर्मेशन डे पे भी। तो 4 साल जब लगातार मिलती गई, चौथे साल पे उनको याद रहा, वो हमको इंडियन बिशप बुलाते हैं, तो बातों-बातों में हमने उनको निमंत्रण दिया, जो मृत्युंजय भाई ने भारत में हमें दिया था, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन, इंडियन इंटरनेशनल कल्चरल मीट ऐसे करके कुछ सम था। तो 2018 की बात है। तो ओबासांजो जी ऑल द वे यहाँ अपने पत्नी, अपने सेक्रेटरी, अपने बॉडीगार्ड और अपने क्या कहते हैं, और अपने राइट हैंड, तो 5 लोग मिलके यहाँ पे आए और दादी जी से मुलाकात की मधुबन में। 10 मिनट का था दोपहर में उनकी मुलाकात, परंतु वो 1 घंटा 10 मिनट हो गया। और अंत में दादी जी से सब बात करने के बाद अंत में वो दादी के पैर के पास बैठ गया और दादी जी को देखने लगा। बोला कि अभी मेरा उम्र लगभग 85 वर्ष का है और मैं वापस जाऊँगा, कब तक जीऊँगा पता नहीं, परंतु आप मुझे ऐसी चीज़ दीजिए जो मैं जाकर पूरे अपने देश में बाँटूँ और उसके बाद मेरे जाने के बाद भी मेरे देशवासी मुझे याद रखें। तो दादी ने एक ही बात कहा, मैं कौन, मेरा कौन। उसके बाद उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, कहा कि बस मैं अभी और किसी से नहीं मिलूँगा, कुछ भोजन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये मेरे जीवन में अहम अनुभव रहा और इस अनुभव के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लगभग 2-3 घंटा लगा हमें उनको समझाने में, बाहर लेके जाने में, क्योंकि 4 धाम की यात्रा नहीं हुई उनकी। तो कैसे भी करके उनको लेके गए और हर धाम में उन्होंने ये कहा, यहाँ की चीज़ें मुझे इतनी अचंभित क्यों करती है, इतनी आकर्षणीय क्यों लगती है, इतनी शक्तिशाली कैसे है ये? मुझे लगता है मुझे वापस यहाँ आना पड़ेगा इस धरनी को समझने के लिए। ऐसे कह के वो वापस आए। थैंक यू सुनने के लिए। ओम बहुत शांति। अच्छा। ओके ब्रदर, so thank you for your time, for your sharing. See, this is our respected Champa Ben, and she is an instrument teacher for us. Champa Ben, ये निमंत्रण दे दो। Yes, thank you. Thanks to you for this आप म्यूट पे हो opportunity. चंपा बहन? अनम्यूट अनम्यूट, कीजिए, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। अनम्यूट करो। There is some question. हो गया। हाँ, अनम्यूट जल्दी नहीं होता है, हो गया। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। आपको नमस्ते। बड़ौदा की तस्वीर खींचने के लिए बड़ौदा आना पड़ेगा और हम फिर आपकी तस्वीर जो आपने बोला ना सालगांव, हम लोग मिनेश भाई, हाँ अब हम ग्रांड सरोवर जाएंगे तो भाई जी की तस्वीर देखने सालगांव में भी जाएंगे। हाँ, वो गीता बहन जो है वो सालगांव में ही रहती थी, सालगांव हाँ में जी, बाजू में ही है, ज्ञान तो सरोवर के भाई बगल जी में। को बहुत बहुत निमंत्रण है और बहुत बहुत थैंक्स। आपने जो बात बताई और आपने जो खाने की बात बताई,
तो मुझे अव्यक्त बाप दादा की एक मुलाकात की बात आ गई। टाइम तो हो गया, लेकिन 1 सेकंड में बताती हूँ। बाबा ने बोला था, मैं एक बार किचन में जा रही थी तो अव्यक्त बाबा मिल रहे थे। बोला ऐसे यादगार भोजन बनाओ जो सब लोग याद करें, तो फिर आपको जन्म जन्मांतर भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप राजा बनेंगे तो बना बनाया मिलेगा। तो भाई जी, आपको भी बाबा आपकी जो विशेषता है, जो सब आपको देश विदेश में वो भोजन खा के याद करते हैं, तो फिर सतयुग में भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजा बन जाएंगे। तो मेरे को ये बात याद आ गई बाबा की, तो मैंने शेयर किया। बाकी बहुत बहुत थैंक्स, और जरूर आपको बड़ौदा में आना है। बड़ौदा भी बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ की मशहूर है राजाई फैमिली, राजमहल वगैरह। तो ओम शांति। Om Shanti. Brother, you understood or do you want me to translate? I understood most of, but if you translate, is better. I understood many things, but Our sweet divine mother is appreciating you and also welcoming you, giving an invitation to Vadodara place, Vadodara center. You have to come and take pictures with your camera of the Vadodara as well. Vadodara is a beautiful place with royal families and with kings. And I remember one thing, that once with Avyakt Babdada, I have an experience as I was entering into the kitchen. And then Avyakt Babdada also said that go and make something like that, cook food like that, you that you take everyone's good wishes, and you don't need to cook for the next kalpa for your probably 21 birth, because a king never cooks, is it? So now you cook, and you cook in such a way that you take hearty wishes of everyone. And so when you spoke about cooking and food, I remember my experience as well. And so I wish that you are also a king who don't need to cook in your future. yes, just enjoying in Satyuga, enjoying life. Gee, brother, you have really wonderful experiences, and it's a great fortune that you have lived for 7 years in Mount Abu. I don't think there is any double foreigners who is able to live for 7 years in a row. So it's a really wonderful part of drama. Really great. Anyway, Yes, it's a time to sit for a few seconds in silence. yes, Okay. yes, and thank you again. Thank you very much. Thank you for invitation. Thank you for the translation and for the blessings that Didi remind us now. Welcome, and don't forget to visit Vadodara next time when you are going to visit Madhuban. Okay, We'll you be will very happy to do so. you will enjoy Vadodara also. Absolutely like Salgaon. Okay, though Vadodara is a large city, but you will enjoy it. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Come. My sweet home, my heart, my sweet home, I long for you. Golden waves glowing still, resting stars in tinting brilliance, basking in their divine radiance. My sweet home, my heart, my sweet home, I long for you. Om Shanti.
Om Shanti, Om Shanti. Om Thank Shanti, you. brother. Come to Thank you. Lagos as well. Oh, yes.